जय जगन्नाथ फ्रेंड्स मु त्रिपति सर आपण मानको पीके स्टडी आईक्यू चैनल को बहुत बहुत स्वागत करूची। तो चलंतु आज हम स्टार्ट करिबा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रो मॉक टेस्ट फॉर स्टार्ट करिबा। तो देखंदो ग्रुप ए दैट इज सब्जेक्ट जनरल नॉलेज रो फर्स्ट क्वेश्चन देखंदो देखिबा। हु इज द हेड ऑफ द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया आज 2023 2023 सुधा लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के हेड ना जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। नेक्स्ट देखो बी आश्रम रोड व्हिच वाज सीन इन द न्यूज इन हिस्टोरिक प्लेस इन व्हिच स्टेट क्यों स्टेट रे देखा जायछि पचारछि। तो देखिबा तो यार आंसर कोन हेजिबो गुजरात। आश्रम रोड केउठा देखा होछि देखा अछि माने अछि आश्रम रोड रो अछि। आर्टिकल 110 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन pertains to which of the following माने आर्टिकल 110 रे कोन लेखा आइछि ना मनी बिल विषय रे लेखा जायछि। द नेक्स्ट टाइम देखिबा द over the top OTT platform are regulated under which rules in India। ये जो OTT that is over the top platform अछि याको मध्ये कोन करा रेगुलेट करा गला या कहा द्वारा रेगुलेट करा गला कहा अंडर रे ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स अंडर रे कोन करा गला OTT प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करा गला। which organization launched the bell identification and traceability system। which organization क्यों ऑर्गेनाइजेशन दा लॉन्च द बेल आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसेबिलिटी सिस्टम। तो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया याकू कोन करचंदी लॉन्च करचंदी मन रखिबे। क्रिस त्रिस एंड बाल्टी बॉय केटीबी एनिमेटेड सीरीज व्हिच वाज रिसेंटली लॉन्च्ड इज एसोसिएटेड। एटा कहा सहित ए जो एनिमेटेड सीरीज एटा लॉन्च हेछि एटा कहा सहित रिलेटेड एटा फ्रीडम फाइटर को एटा कोन रिलेट करूछि। ठीक अछि मन रखिबे स्वाधीनता संग्रामी बा हमर फ्रीडम फाइटर मानक पे एटा रिलेट करूछि। व्हिच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड द ईट राइट्स क्रिएटिविटी चैलेंज फॉर मिलेट्स। जो मिलेट्स पे ईट राइट क्रिएटिविटी चैलेंज फॉर द मिलेट्स पे गोटे कोन कराय जे गोटे इंस्टीट्यूशन कोन लॉन्च करूछि कोन ना ईट राइट क्रिएटिविटी चैलेंज फॉर मिलेट्स या कोडा ना FSSAI OSAI APAAR account registry which was seen in the news is associated with which field। एटा केउ फील्ड को एटा रिलेट करूची APPAR अकाउंट एटा एकेडमिक्स को कोन रिलेट करूची मन रखिबे। नेक्स्ट देखिबा व्हिच ऑफ द एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर आस्क्ड स्टेट्स टू कंडक्ट डिजिटल क्रॉप सर्वे फ्रॉम माने मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर कोन करचंदी ना आस्क्ड टू कंडक्ट द डिजिटल क्रॉप सर्वे क्रॉप रो डिजिटल सर्वे को डिजिटल कंडक्ट माने सर्वे करिया पे केबो स्टार्ट करिया जिवो ना जुलाई 2024 स्टार्ट करिवो मन रखिबे। इंडियन गवर्नमेंट हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड ए स्टैंडर्ड्स एंड लेवलिंग प्रोग्राम फॉर द व्हिच प्रोडक्ट्स ना सोलर पैनल्स में कोन करा छी इंडियन गवर्नमेंट हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड स्टैंडर्ड्स एंड लेवलिंग प्रोग्राम फॉर द प्रोडक्ट्स हो जे केउ प्रोडक्ट्स में ना सोलर प्रोडक्ट्स बा सोलर पैनल्स मन रखिबे। सोलर अलायंस मध्ये हम इंडिया रे ही होची माने सोलर अलायंस रो SAI दैट मींस सोलर अलायंस रो ISI इंटरनेशनल सोलर अलायंस रो हेडक्वार्टर मध्ये हम इंडिया रो अछि दैट इज हरियाणा गुरुग्राम रो अछि मन रखिबे। देन देखिबा ग्रुप बी देखिबा आंसर द फॉलोइंग व्हिच स्टेट अचीव्ड 100% ODF plus coverage all its 95,767 villages in स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण यूपी। उत्तर प्रदेश कोन करछि 100% ओपन डिफेक्शन फ्री प्लस कवरेज कोन केते विलेज को से माने कवर करछि ना 95,767 विलेज को कवर करछि इन स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अनुसार ये कोन करछि ODF प्लस 100% करछि ओपन डिफेक्शन फ्री दैट इज यूपी गवर्नमेंट। व्हिच इंडियन मिनिस्ट्री रिलीज्ड उम्मीद गाइडलाइंस क्यों मिनिस्ट्री उम्मीद गाइडलाइंस को क्यों मिनिस्ट्री उम्मीद गाइडलाइंस को रिलीज करिछि। तो देखिबा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ए जो उम्मीद ता कोन एजुकेशन को रिलेट करूची। देन देखिबा श्रेष्ठ स्कीम व्हिच वाज सीन इन न्यूज वाज लॉन्च्ड बाय व्हिच यूनियन मिनिस्ट्री। श्रेष्ठ स्कीम डा केउ यूनियन मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च कराइछि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा रिलीज कराइछि मन रखिबे। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड टू प्रमोट यूथ डेवलपमेंट इन इंडिया। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑटोनोमस केउ ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूथ को माने प्रमोट करिया पई बा डेवलपमेंट करिया पई इंडिया रे मेरा युवा भारत लॉन्च करा जायछि।
of which Indian state or UT launched Arunodai 2.0, Arunodai 2.0, a poverty alleviation scheme that is Assam. Assam द्वारा कौन कराई आपको लॉन्च करा जाइछि आम ओडिशा नवीन ओडिशा आम ओडिशा नवीन ओडिशा which was launched recently aims to improve एटा केउठा लॉन्च करा जाइछि ना आम ओडिशा आम नवीन ओडिशा that is ओडिशा रे लॉन्च करा जाइछि which state UT launched the CM elevate events केउ स्टेट बा UT कोन CM elevate event को लॉन्च करछि that is मेघालय मन रखिबे which यूनियन मिनिस्ट्री launched अपना चंद्रयान पोर्टल केउ मिनिस्ट्री को लॉन्च करछन्ती ना मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मन रखिबे what is the name of the program launched to enhance connections among young individuals from the diverse states of India युवा संगम ठीक अछि युवा संगम इज योर आंसर अनुभव पोर्टल केउ पोर्टल ना अनुभव पोर्टल which was seen in the news is associated with which union ministry that the Ministry of Personal and Public Grievance and Pensions is your answer which union ministry is associated with National Action Plan for the Drug Demand Reduction PDDR Ministry of Social Justice and Employment मन रखिबे केडा देन जदि हम देखिबा एल नंबर देखिबा पीएम ई बस सेवा कोन पीएम प्रधानमंत्री ई बस सेवा स्कीम which approved recently aims to develop how many e buses कोन 10000 ई बसेस को ये कोन करो डेवलपमेंट करिया पई पीएम ई बस सेवा स्कीम रे को लॉन्च करा जाईची 10000 ई बस डेवलप करिया पई which said UT launched the आबुआ आवास योजना आबुआ कोन झारखंड कोन करचंदी ना आबुआ आवास योजना स्कीम को लॉन्च करचंदी राष्ट्रीय गोकुल मिशन केउ मिशन ना राष्ट्रीय गोकुल मिशन इज एसोसिएटेड विथ व्हिच मिनिस्ट्री राष्ट्रीय गोकुल मिशन डा हमर मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंडरी एंड डायरी को रिलेट करछि मन रखिबा राष्ट्रीय गोकुल मिशन तान नेक्स्ट हम देखिबा मिंदुम मंजपाई इज स्कीम launched by which Indian state to curb plastic usage माने प्लास्टिक यूजेस को कर्ब करिया पई कोन गोटे लॉन्च करा जे गोटे स्कीम एटा होची मेंदुम मांजापाई दैट इज तमिलनाडु रे लॉन्च करा जाय जे मन रखिबे देन देखिबा ग्रुप सी देखिबा ग्रुप सी रे कोन कोजी देखंदो which institution has raised more than 1000 crore via social bonds तो मन रखिबे नाबार्ड ठीक अछि which institution approved capital management reforms that will unlock $100 billion in funds over the next 10 years that is ADB ठीक अछि एशियन डेवलपमेंट बैंक कोन करिवो नेक्स्ट 10 इयर्स रे कोन करिवो $100 billion फंड्स को से कोन करिवो मैनेजमेंट बा रिफॉर्म्स वगैरह करिवो tokenization which was seen in the news associated with पेमेंट सिक्योरिटी कोन करा जाय टोकन को टोकनाइजेशन करा जाय which organization released guidelines for बीमा विकास में गाइडलाइंस के रिलीज करछि IRDAI मन रखिबे which the International Monetary Fund IMF raised India's growth forecast in the fiscal year केते 2023-24 रे केते ना 6.3 बोले अनुमान करा जाय which institution has initiated a pilot program for wholesale digital rupee in call money market that is RBI ठीक अछि which block has recently adopted roadmap on the regulation of crypto assets को कोन रेगुलेट करिया पे जो क्रिप्टो करेंसी वगैरह अछि बा क्रिप्टो संपत्ति संपत्ति आगो रेगुलेट करिया पे केउ ब्लॉक आगो आसे बा रोडमैप क्रिएट कर दैट इज G20 मन रखिबे which Indian institution is associated with the country's foreign exchange management country ro foreign exchange management रे की एसोसिएट अछि RBI एसोसिएट अछि देन देखिबा operation cess which was launched recently aims to curb illegal trade timber ro illegal trade को कोन करिया पे रोकिया पे कोन कराई जे ऑपरेशन cess बोली ओटे लॉन्च कराई जे ऑपरेशन ठीक अछि which European country central bank announced to pilot wholesale digital currency केउ करेंसी लॉन्च करछि बा अनाउंस करछि तो देखिबा स्विट्जरलैंड हे जो यार आंसर मन रखिबे
investor risk reduction assets IRRA platform has been developed by stock exchange द्वारा मन रखिबे। तो नेक्स्ट देखंदु द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE signed MOU with which state to help small and medium enterprises SMEs raise funds through the capital market, that is West Bengal is your answer. Next देखिबा which institution announced a regulatory framework for index provider, तो केउ institution announce करूची regulatory framework for index provider SEBI is your answer. Next देखंतु कोन होइची which is principal regulator for the sale and purchase of stressed loans in the India, that is RBI कोन करछि regulate the sale and purchase stressed loans को कोन करछि इंडिया रे रेगुलेट के करछि RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एप कोन रेगुलेट करछि मन रखिबे। जदा हम नेक्स्ट देखिबा which institution board the Bharat bill payments BBPS, that is NPCI as per S&P ranking, which Indian insurance is fourth largest in the world insurance, ठीक अछि LIC, ठीक अछि जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI enhanced the UPI payments limits for healthcare and education from 1 lakh to केते ना 5 लाख इंश्योरेंस कोन करछि आको हेल्थ इंश्योरेंस को कवर करिवो बा एनहांस द UPI पेमेंट्स लिमिट्स जो UPI अछि UPI रे जो पेमेंट्स लिमिट्स कोन 1 लाख रु 5 लाख जाय करा गला, माने जो UPI पेमेंट गुडा जो ट्रांसफर करिया बा सेंड करिवा तो सेटा लिमिट कोन बढ़ा जाय छै 1 लाख रु 5 लाख जाय हेल्थ केयर आ एजुकेशन क्षेत्र रे। which is headquarter of Asian Infrastructure Investment Bank AIIB, that is Asian Infrastructure Investment Bank को headquarter कोडे Beijing China। the term Swami investment fund that has recently making news is related to ना आको कोन कहा को रिलेट करछि एना रियल एस्टेट को रिलीज करछि। at present, that is December 2023, who state accounts are the highest share in the digital rooftop solar installation, जदि हम देखियो solar installation higher share कार अछि ना गुजरात स्टेट रो अछि। which state is home to Kakrapura atomic project that recently achieved critically signifying the onset of the controlled fission chain reaction, तो केनटा अछि Kakrapura atom reaction दा atomic power project अछि हमरो गुजरात रो अछि। from which country India recently imported crude oil by paying in Indian rupee देगी कोन करछि बा अंडर रूपी धीरम ट्रेड एग्रीमेंट रे रूपी आ धीरम ट्रेड एग्रीमेंट द्वारा इंडिया कोन करछि ऑयल किनिछि रूपी देकी, तो केउ कंट्री को ना UAE, ठीक अछि। as per RBI's new policy, what is the maximum divided commercial banks can pay out based on their net NPA ratio, तो केते हिजबो ना 50% हिजबो एर आंसर। ONGC Videsh, the overseas investment arm of the ONGC, holds 40% stake in the San Cristobal field that was recently in news. In which country this field is located, that is Venezuela, ठीक अछि मन रखिबे। which company owned the highest number of oil and gas blocks in the recent open acreage licensing policy bidding round, that is ONGC। next देखिबा arithmetic, तो मैथ सब्जेक्ट देखंदो arithmetic रे हम देखिबा कोन केते क्वेश्चन दैछि ना 10 टा क्वेश्चन, each question carries 10 marks, गोटे क्वेश्चन 10 मार्क कैरी करछि। दैट मींस हम कोन करिया पूरा हमको स्टेप वाइज कोन करिया मैथ गुडा लिखले हमको 10 रु 10 मार्क मिलिबो, ठीक अछि। स्टेप वाइज मन रखिबे, गोटे भी स्टेप न छाडी के लिखिया पड़ियो जेमति हम स्कूल रे लिखुतले, ठीक अछि। मन कर गोटे संख्या लाइक दैट गोटे हम स्टेप गुडा लिखुतले ट्रेडिशनल मेथड बा हम कोन करथले जो गणित रो जो स्टेप गुडा अछि प्रति स्टेप को आपको मार्क दबो। तो देखंतु एक नंबर क्वेश्चन देखंतु कोन कहूची द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज केते 1920 and the ratio केते देइछि 16, that is 16, if one of them is केते 128
फाइंड द अदर नेम ताहले अदर नंबर केते पचारछि ताहले हमें जानि चंदी कि यार फार्मूला कोन जानचंदी द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर इक्वल टू द एलसीएम एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ माने फर्स्ट नंबर आ सेकंड नंबर मल्टीप्लिकेशन कोन तार एलसीएम आ एचसीएफ रो प्रोडक्ट सहित समान तो वी हैव हमें कोन करिबा फर्स्ट नंबर अछि सेकंड नंबर अछि याको हमें कोन करले देन हमें सेकंड नंबर बाहर करिबा सेकंड नंबर बाहर करले हमें कोन करिबा देखंतु फर्स्ट नंबर केते देइछि वन ऑफ द नंबर इज केते 128 देइछि 128 इनटू मनकर सेकंड नंबर ता मु कोन लिखि देली सेकंड नंबर इक्वल टू कोन एलसीएम केते 1920 एंड केते 16 देन मु कोन करिव सेकंड नंबर इक्वल टू कोन करिबा 1920 इनटू 16 डिवाइड 128 करिबा तो जाके हम सॉल्व करिबा कोन हे जिवो आंसर आसबो देखंतु 4 चौकु 16 4 त्रिकी 12 4 दुगुणे 8 4 एक 4 4 ना 32 8 एक 8 8 दुगुणे 16 3 आले 8 चौकु 32 यासे 16 दायते 240 आसीगला यार हम रखिबे the product of two number is kete 1280 and their HCF kete 8 the LCM of the will be kete LCM पचारछि तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ऑलरेडी दे दीची दीटा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर केते देइछि 1280 देइछि तो 1280 में पके देबी देन तापर LCM देइछि केते 8 देइछि देन कोन देइछि सॉरी HCF देइछि 8 देइछि देन पचारछि कोन LCM देन LCM इक्वल टू कोन करिबा LCM इक्वल टू 1280 बाय 8 रे हम को कोन करा डिवाइड करिबा तो डिवाइड करले कोन होबो 8 एक 8 8 6 को 48 यासे 16 तो आंसर केते हिजो 160 हिजो एलसीएम ठीक अछि मन रखिबे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखिबा द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज केते ना 15 देइछि एंड देयर एलसीएम केते देइछि 225 देइछि इफ वन ऑफ द नंबर इज 75 देन अदर नंबर सेम क्वेश्चन एक नंबर क्वेश्चन बोले हे एटा अछि तो हमें कोन करिया फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर मल्टीप्लाई करिबा दैट इज एलसीएम एचसीएफ आसीबो देन फर्स्ट नंबर पकेले 75 एंड सेकंड नंबर इक्वल टू कोन हे जिवो ए दिटा मल्टीप्लाई बाय डिवाइड करिबा तो 15 इनटू केते 225 एलसीएम एचसीएफ देइछि एंड गोटे नंबर के देइछि 75 देइछि तो 15 पंचा 75 5 चौको 5 पंचा तो 45 हो गेला यार आंसर द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर आर के देइछि 12 and 2 9 2 4 respectively then the number of such pair केते ताहले the number of such pair कोन कोन पेयर हेई परबो से पचारछि ठीक अछि एलसीएम एचसीएफ तो दे दिछि ऑलरेडी तो हमें कोन करबा एलसीएम के एचसीएफ के देइछि एचसीएफ देइछि 12 देइछि एंड एलसीएम के देइछि 924 देइछि ताहले हमें कोन करबा लेट द नंबर्स केते हमें नै जिबा गोटे हमें कोन करिया एचसीएफ पर नै जिबा 12p and आउट नैले 12q where p and q are prime to each other then LCM हम कोन करि परिबा LCM आर कोन आसीबो गुणन हे जिवो कि नै तो गुणन करले केते हिला p 12 माने एमन को जदि हम बाहर करिबा LCM बाहर करिबा 12p and 12q रो जदि LCM बाहर करिबा ताले केते आसीबो 12pq देन क्वेश्चन रे कोन देइछि LCM केते देइछि LCM देइछि 924 देइछि तो मु कोन करिवि 12pq = 924 पके परिबि देन pq = कोन हे जिवो 924 बाय 12 924 by 12 करिबा तो 12 कला पर केता आछे ना 77 आछे नेक्स्ट पॉसिबल पेड्स माने हम कोन करि परिबा 77 रो गोट पेड्स नेबा गोट 1 नेबा गोट 77 नेबा तो गुणले केते हो 77 देन आ गोट 7 देन आ गोट कोन 11 नेबा तो एला कोन हो 77 होची आ कोडा कोन होची नाही तो आरो पेड केते हे परिबो ना दीटा पेड ही आरो हे परिबो ठीक अछि मन रखिबे What is the area of the equilateral triangle having altitude equal to 2√3? जार कि कोन 2√3 कोन अछि 2√3 सेंटीमीटर द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल केते हबो दार अल्टीट्यूड माने हाइट केते अछि 2√3 ताले देखंतु यार फार्मूला पकेबा एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल रो कोन √3/4a² √3/4a² होछि कोन इक्विलेटरल ट्रायंगल रो कोन एरिया तो देन हमें कोन करबा इक्विलेटरल ट्रायंगल एरिया देखो से देइछि अल्टीट्यूड देइछि अल्टीट्यूड जो देइछि एला हम आ कोन करि परिबा यार अल्टीट्यूड देइछि 2√3 देइछि तो एठार हम कोन करि परिबा सॉरी √3 देइछि केते वैल्यूटा देखि देबा हां 2√3 देइछि नै तर अल्टीट्यूड
एटा हम कोन करिया एरिया रो फार्मूला गोटे पके परिया हाफ इनटू बेस इनटू हाइट इक्वल टू केते एटा होची एरिया रो फार्मूला टा तो एटा होची आ गोटे एरिया तो दुईटा जग एरिया गोटे एटा होची इक्विलेटरल ट्रायंगल एरिया रो फार्मूला एटा होची नॉर्मल हमरो ट्रायंगल रो फार्मूला तो एठारे हम कोन कले √3/4 स्क्वायर देन तापरे h इक्वल टू कोन बाहर करबा h रो फार्मूला एटा हम बाहर करि परिया कि तो h इक्वल टू कोन हे जिवो h इक्वल टू √3/4 असला a स्क्वायर सेपटल कोन जो गुणन तो देन तापर एटा कोन हे जिवो डिवाइड हे जिवो एटा ठीक अछि a को a कटिला देन कोन करिया 2 1 2 2 2 गुणे 4 तो h इक्वल टू केता आसी जिवो ऊपर ला √3a एठारे कोन जो √3 भाई एटा के 2 अछि एटा 2 अछि ठीक अछि तो एटा कोन 2 लिखले देन तापर हम कोन करिया h इक्वल टू आसीला तो h इक्वल टू देछि केते हाइट देछि केते 2√3 देछि ठीक अछि अल्टीट्यूड माने हाइट देछि हाइट ऑलरेडी देछि तो ए हाइट को से हाइट हम सेम करि परिबा देखंतु एटा देछि क्वेश्चन रे देछि प्रश्न रे देछि h इक्वल टू 2√3 बट एठारे हमर h इक्वल टू केते आसला √3a/2 आसला तो देन एठारे हम कोन करि परिबा ए हाइट को से हाइट हम इक्वल करि परिबा ठीक अछि इक्वल करले कोन हो देखंतु √3a/2 इक्वल टू एटा कोन हाइट ना यार हाइट इक्वल केते आर हाइट देछि केते 2√3 एठार मु कोन करबी 2√3 पकेबी देन तापर एडी a अछि ठीक अछि देन a इक्वल टू कोन हे जिवो a इक्वल टू 2√3 इनटू 2/2√3 √3 को √3 कटला देन a इक्वल टू केते आसला a इक्वल टू 4 आसला दैट इज a इक्वल टू 4 एरिया इक्वल आसीगला तो एरिया आसला पर हम a इक्वल आसीगला देखो a इक्वल टू वैल्यू केते आसला 4 सेंटीमीटर आसला देन एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल रो फार्मूला कोन √3/4 स्क्वायर √3/4 a स्क्वायर तो देन कोन करिया √3/4 a स्क्वायर माने कोन 4 स्क्वायर 4 * 4 करिबा तो 4 * 4 कटला तो कोन आसबो 4√3 सेम इज चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द बेस ऑफ एन isosceles triangle 300 units and each of its equal sides माने विषुव त्रिकोण ठीक अछि त्रिभुज विषुव त्रिभुज रो बा isosceles triangle is 300 unit and each 170 units then the area of the triangle केते बोलछ देखन सॉल्व करियो ए बी सी गोटे कोन आइसोस्केलेन ट्रायंगल ठीक अछि देन तापर एडी देछि से दुईटा बाहु समान कोइतला तो कोन हैला 170 170 नेला देन आ गोटे बाहु केते 300 देन तापर हम कोन करिबा से पचारछि कोन एरिया पचारछि तो एरिया इक्वल टू हाफ इनटू बेस इनटू हाइट अछि देन तापर एटा हम कोन करि परिबा एडी बाहर करिबा যদি এডি যদি বাহার করি এটারে এডি এটারে কোন আছে ডিসি আছে এটারে আছে 170 আছে তো এটা যদি টোটালটা কোন হইলা 300 হইলা তো এটা কোন আছে এটা 150 হইଯିବ দেন এ ডিসি বিডি 150 দেন ডিসি 150 হইলা দেন যদি এডি বাহার করিবা এডি মানে এটা কোন হাইট যদি বাহার করিয়া কোন হইଯିବ हमर हाइपोटेनस रो स्क्वायर माने कोन 170 रो स्क्वायर माइनस देन तापर बेस रो स्क्वायर दैट इज माइनस डीसी माने केते 150 रो स्क्वायर ठीक अछि आई थिंक क्लियर हेतिबो देन तापरे से कोन कहूची तार रूट ओवर भारियो आ ठीक अछि ताले हम को सॉल्व करले केते आसीबो 28900 माइनस 22500 रो रूट ओवर बाहर करबा देन तापरे कोन होबो देखंतु यार एकु जदि हम फेडिबा बा माइनस करबा कोन आसीबो 6400 देन यार रूट ओवर केते आसी 80 आसी ठीक अछि देन एटा जदि हम पुट करबा कोन आइजो हाफ इनटू यार एडी इक्वल केते आसला 80 आसला देन तापरे बीसी इक्वल केते देछि 150 ठीक अछि
ସରି ଏଟା କେତେ 300 ଦେଇଛି 300 ଦେଇଛି ଠିକ ଅଛି କଣ 300 ଦେନ୍ ତାପରେ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିବା 2 ରେ କାଟି ଦେବା ଏଟା କେତେ 150 ଆସିବ 150 into 80 କେତେ 12000 units then चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करियो the hypotenuse of a right angle triangle is केते देछि 10 cm and its area केते देछि 24 semi square if the shorter side is halved and the longer side is doubled then the hypotenuse becomes कोन हबो पचाछ चलो हम याको सॉल्व करिवा let shorter side of and the longer side of right angle triangle भी गोटे x और y नहीं गेले short टा को नहीं गेले x and the long टा को नहीं गेले हम कोन y नहीं गेले then कोन हे जिवो x square plus y square कोन हे जिवो 10 square देछि से ठीक अछि कारण से कोन कहै हाइपोटेनस देछि ठीक अछि हाइपोटेनस कहते 10 सेंटीमीटर देछि तो हाइपोटेनस रो फार्मूला कोन हाइपोटेनस रो स्क्वायर इक्वल टू बेस रो स्क्वायर प्लस हाइट रो स्क्वायर तो एठारे हम कोन करले एठारे शॉर्टर टा आ गोटे कोन नै चंदी शॉर्टर आ गोटे लॉन्गर टा नै चंदी तेमान को हम कोन करले गोटे को हम बेस आ गोटे हाइट नै ले तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू कोन हाइपोटेनस रो स्क्वायर हे जिवो दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कोन हेला इक्वल 100 इक्वेशन 1 हे गला देन एरिया इक्वल टू कोन हम जानि चंदी एरिया इक्वल टू हाइट इनटू बेस इनटू कोन होबो हाइट इनटू बेस ठीक अछि तो x and y इक्वल टू एरिया इक्वल टू देछि ऑलरेडी कर देछि 24 सेमी स्क्वायर देछि देन एठा हम कोन करि परिबा xy इक्वल टू कोन हे जिवो एटा 24 into 2 हे जिवो दैट इज 48 हे गेला हां के नै देन तापर हम कोन करिबा y x रो वैल्यू बाहर करिबा x इक्वल टू 48 डिवाइड कोन हे जिवो y हे जिवो देन हम कोन करिया ए y रो वैल्यू टा हम कोन करिबा इक्वेशन 1 रे हम पुट करि परिबा ठीक अछि जेतले हम इक्वेशन 1 रे पुट करले कोन हैला 48 बाय y रो स्क्वायर प्लस कोन y स्क्वायर इक्वल टू 100 देन 48 प्लस y रो कोन पावर 4 इक्वल टू 100 y स्क्वायर देन तापरे y रो 4 माइनस एटा कोन हे जिवो 100 y रो स्क्वायर प्लस 48 दैट इज 0 देन तापरे वी सॉल्विंग ताकू जदि हम सॉल्व करबा सॉल्व कलर केता आसे x रो वैल्यू 6 किबा 8 आसे हमें x रो y रो वैल्यू 6 और 8 माने 6 आ 8 आसे तो हमें x रो वैल्यू गोटे नेइले 6 आ गोटे नेइले 8 नेइले पुट कला परे देन x becomes half and y becomes double तो जमे कोन करे x को हाफ कर दबा x को हाफ माने कोन 6 रो हाफ कर दबा 3 आसीला देन 8 को डबल कर दबा तो 16 आसीला देन हम एठार कोन करि परिबा हाइपोटेनस जदि हम बाहर करबा तार बेले कोन हे जिवो तो बेस रो स्क्वायर प्लस हाइट रो स्क्वायर रूट ओवर बाहर करबा तो 3 रो स्क्वायर प्लस 16 रो स्क्वायर रूट ओवर बाहर करले 265 आसीला सेंटीमीटर रूट ओवर ऑफ 265 सेंटीमीटर a right angle circular cylinder just encloses a sphere if p is the surface area of the sphere and q is the curved surface area of cylinder then which of the following is correct ठीक अछि मन रखिबे अब सॉल्व करे चलंदु तो p इक्वल टू से कोइ p is the surface area तो surface area फॉर्मूला अप्लाई करले for pi r square then the बेटर हम कोन करले q is the curved surface area तो एथर कोन 2 pi r h then एथर हम कोन करबा h इक्वल देछि केते curved area cylinder then height just enclose the sphere p is the surface area of the sphere q is the curved surface area of the surface area of the cylinder and which of the following is correct then तापर हम कोन करि परिबा h height को हमें 2r नै चंदी तो एटा हम कोन ले h को 2r नेले जेतलो ए दिडा मल्टीप्लाई करबा 2 2 4 ऐसे pi r स्क्वायर तो हेंस p इक्वल टू q कारण p इक्वल टू केते देछि 4 pi r स्क्वायर देछि देन जेतलो कि हमें h माने h रो वैल्यू केते बगले h इक्वल टू 2r बगले देन जेतलो एतरे हमें h बगरे 2r रो वैल्यूटा बगले आपको मल्टीप्लाई करले पर कोन आसला pi r स्क्वायर आसला तो दिडा जाओ इक्वल है दैट इज p इक्वल टू a boy has 3 library cards and 8 books of interest in library of this 8 he does not want to borrow chemistry part 2 unless
chemistry part 1 is also borrowed. In how many ways he can choose the three books from the borrowed? एटा हमर कोन प्रोबेबिलिटी आछि पॉसिबिलिटी बा प्रोबेबिलिटी तो केमिस्ट्री पार्ट 1 अवेलेबल केतो अछि 8 बुक्स विथ केमिस्ट्री पार्ट 2 or chemistry part 2 is not available in 8 books but chemistry part is available. तो number of texts माने को वेर नै परिबा 1 into 1 6 c1 6 c1 plus 7 c3 ठीक अछि ताला हम सॉल्व करले कोन हे जिवो 6 c1 माने कोन 6 1 1 तो सेतिया रहबो 6 देन तापरे प्लस एटार कोन अछि 7 c3 दे अछि तो एटार हम कोन करियो 7 into कोन 3 3 जे नेबा 3 प्लस दे एटार कोन 6 into 5 5 बाई कोन करिबा एटार कोन 3 अछि तो 3 into 2 into 1 1 लिखले जा न लिखले भी ताहा तो 3 2 गुणे 2 2 कटिला देन 7 5 35 ए प्लस 6 केतला 41. In how many different ways can be letters cycle can be arranged kete way re ami cycle ta ko kete way re cycle ta arrange kari pariba there are 6 letters ketra letter achi attend ro achi 6 letters achi t comes two times kon etre t da di two times achi so required number ways kon he jibo 6 by 2 that is ame kon kariya 6 mane kon he jibo 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 by 2 2 टू कटे जीव 54 30 4 3 12 120 या 54 30 4 4 3 12 12 36 360. The number of ways in which 6 men and 5 women can dine ठीक अछि dine at round table if no two women are together sit together given by ताला हम कोन करिबा तो हम कोन करिबा जे 6 men and 5 women can dine at table तो 6 into 5 करि परया तो एडा मध्ये अब हम सॉल्व करि परिबा 6 रो वैल्यू एंड 5 रो वैल्यू को हम पुट करि. In how many different ways can letters of word problem can be arranged? कोन केतरा देछि प्रॉब्लम how many days ways केतरा ways 17 अछि 17 लेटर अछि 4 3 7 तो नंबर का अरेंज हम करि परिबा तो 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 देन चलो हम स्टार्ट करबा इंग्लिश सेक्शन स्टार्ट करबा देखो इंग्लिश कोन कहूची तो प्रथम इंग्लिश रे कोन करचंदी सब बेले हमें कोन करचंदी गोटे एसे तो एसे गोटे टॉपिक दोची तो एसे को हम गोटे डिस्कशन करबा तो क्लाइमेट चेंज विषय रे कहूची क्लाइमेट चेंजेस refers to the change in the environmental condition of the earth this happen due to internal external factors why then the climate change has become global concern over the last few decades besides the climate changes affect the life and earth various ways. These climate changes are having various impacts on the ecosystem and ecology due to changes माने से कोन करछि ए जो इकोसिस्टम चेंज हे किपरि होउछि बा इकोलॉजी इफेक्ट किपरि होउछि तो ड्यू टू हमरो एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स होछि ग्लोबल एडा गोटे कंसर्न होछि क्लाइमेट चेंजेस ता एडा कोन पे होछि हमरो ह्यूमन बीइंग पई होछि पॉपुलेशन बढ़िया जो होछि यार चेंजेस जो कोन होछि नंबर ऑफ स्पेसीज ऑफ प्लैनेट्स धीरे धीरे कोन होछि एक्सटिंक्ट होछि माने लुप्त हे जाउछि धीरे धीरे the climate started changing a long time ago due to human activities but we came to know about in the last century during the last century we started noticing the climate change and its effect of human life we started researching on climate change and came to know that the earth atmosphere is rising due to the phenomenon called the greenhouse effect the warming of our earth's surface causes many ozone depletion affect our agriculture water supply, transportation, and several other problems. These include volcanic eruption द्वारा होची, solar radiation and tectonic plate movement, orbital variation भी changes होची. Due to these activities, geographical condition of area becomes harmful of the survive.
and also these activities raise the temperature madhya baduchi dhire dhire. Next, man due to his need and greed done many activities that not only harm the environment but also from himself to many plant and animals extend due to human activity. Human activities that harm the climate include deforestation द्वारा होची and using fossils fuel and industrial waste ପାଇଁ different types of pollution and many more ପାଇଁ होची एगुडा जहाँ भी extinction होची. All these things damage the climate and ecosystem very badly, and many species of animals and birds got extinct on or on a verge of extinction due to hunting ପାଇଁ ମଧ୍ୟ होची. If if we do not anything do things continue like that right now, then a day in future will come when humans will extinct from the surface. ଯେମିତି ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ପେସିସ୍ ଗୁଡାକୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ପେସିସ୍ ହଉ କି ଆମେ एनिमल स्पीसीज को जेतोल के धीरे धीरे एक्सटेंड करछन्ती धीरे धीरे आमे मध्ये ह्यूमन बीइंग मध्ये एक्सटेंड नै जीवो एडा पूरा कोन हे सुनसान पूरा विरळ पड़ी जीवो. But instead of neglecting these problems we start acting on them, we can save the earth and our future. Then आमे कोन ऑप्शन रे गोटे लिखिबा तो वुमेन एम्पावरमेंट विषय देइची को देखे देबे. देन क्रिकेट विषय देइची. देन एठा हम लिखिबा कोन सिक लीव एप्लीकेशन गोटे लिखिबा तो प्रिंसिपल ठीक अछि दे खराब अछि कोइ की गोटे लीव पई एप्लीकेशन लिखिबा तो प्रिंसिपल स्कूल नेम एड्रेस सब्जेक्ट लिखिबे कोन सब्जेक्ट कोन एप्लीकेशन फॉर सिक लीव रिक्वेस्टेड sir madam with due regard I want to notify you that my child, that is name of the student, is a student of class and of your school. Due to some wellness issue, my boy or girl hospitalized or recommended to be in a doctor's monitoring for 2 days. My family members are taking care of him or her in hospital. Right now we are not in state to send him or her to school. Hence, I beg to please understand our position and grant my child leave for mention number of days. Likhiba. Then start date and end date. I am inserting a medical document from doctor of your reference. I ensure you that he or she attend the school daily going forward. Thank you. Yours obedient. Name, class, section. Then देखिबा ट्रांसलेशन करिबा कोथरे ट्रांसलेट पैसेज टू ओडिया इंग्लिश रो ओडिया में ट्रांसलेट करिबा. The literal meaning of compression is undertaking. It shows how well you have understand a paragraph that you have read or how correctly you have grasped its meaning. To test it, set of questions is given after paragraph relating to the subject matters. The answers contained in passages. It only requires a bit of intelligence to identify sentence or sentences that form the answer to a particular question. Write them down in our own hands. It is simple. The exercise of comprehension is meant to assess the and betterment ability of the student to read and comprehend of what he reads. Sometimes he answer need to written in the student's own words. Although not very difficult from the given text, only a little adjustment to have sentence grammatically and meaning-wise correct. Hence, a student must be able to express his thoughts and precise and with incorrect words. Comprehension माने तो मूल तो हैला बुझिबा. comprehension माने बुझिबा हे आपनर कोनोस अनुच्छेद को पढ़ी कि बुझिबार क्षमता को बुझाए. एई क्षमता को परीक्षा करिबा पई आपण गोटे अनुच्छेद तास जड़ित किछि प्रश्न दिया जाय प्रश्नर उत्तर अनुच्छेद रे थाए. केवल आपण को केवल निजर बुद्धि अनुଯାयी प्रश्नर उत्तर अनुच्छेद रे खोजिबा पड़े. उत्तर को आपण निज हाथ रे लिखिबे. ଏହା ଅତି ସରଳ. କମ୍ପ୍ରେସନର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଛାତ୍ରର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଅଟେ.
କିଛି କିଛି ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଅନୁଯାୟୀ ପଢ଼ିକି ନିଜ ଭାଷାରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଛାତ୍ରକୁ ସତର୍କତା ସହ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ ଦ passage into English। ଓଡ଼ିଆକୁ ଇଂଲିଶରେ ଇଏ କରିବା। ଉତ୍କଳ ଯାହାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଭାଷାରେ ଜାଣୁ ଉତ୍କଳ ଯାହାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଭାବରେ ଜାଣୁ ବା ଉତ୍କଳ ଯାହାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଭାବରେ ଜାଣୁଛୁ, ଏହା ଭାରତର ଏହା ସାର ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ରାଜ୍ୟ। ଉତ୍କଳ ଶବ୍ଦଟି ମନ୍ତ୍ରଣା କରିବା ପ୍ରାଚୀନ ସମୟରୁ ଗୁରୁତର ଅର୍ଥ ରଖେ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଇତିହାସ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ବହୁତ ପ୍ରାଚୀନ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗର୍ବରେ ଦେଖୁଛୁ। ଉତ୍କଳର ଇତିହାସରେ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳ ଏବଂ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅନୁସାରେ ବିକାଶ ହୋଇଛି। ପୁରାତନ କାଳରେ ଏହା କେବଳ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିର କ୍ଷେତ୍ର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ଶିଳ୍ପ, କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ଭାବନା ଓ ଉନ୍ନତି ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା କରିଥାଏ। ଉତ୍କଳର ଅନେକ ପ୍ରାଚୀନ ନିର୍ମାଣ, ଯେପରିକି କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଓ ଗଣେଶପୁର ଦେବଗାଁଠି ଯାହା ସାଙ୍ଗ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି ନିର୍ମାଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଦୂର ଦୂରରୁ ଲୋକେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏହା ସହ ଓଡ଼ିଶାର କଳା, ହାତରେ ଶିଳ୍ପ ଓ ଚିତ୍ରକଳା ସମୃଦ୍ଧ। ଉତ୍କଳର ସଂସ୍କୃତିର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମାଣିକତା ହେଉଛି ଏହାର ପ୍ରାଚୀନ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ପାଇଲି, ଯାହା ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଉଦୟ ସାର୍ଥକ କରେ। ମାଳକୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଧୀନ ଦିନ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଅନେକ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରୟାସର ସାଥୀ ହେଉଛୁ। ଉତ୍କଳ, which we know as Odisha, is rich and culture of state of India. The word Utkala carries meaning the importance of since ancient times. The history and culture of this region is very ancient, which we are proud of even today. Utkala has developed under various cultural groups and empires throughout its history. In ancient times, it was not only the center of the industry and culture, but also flourished in crafts and music, dance, and literature. Odisha's potential and development set the apart from other states. A number of ancient structures in Utkala, such as Surya Temple in the Konarko, the Lingaraj Temple in Bhubaneswara, and Ganeshwara and Devagathi, provide evidence. People come from far and wide to see these structures. Besides, Odisha is rich in arts, handcrafts, and paintings. One of the most authentic aspects of Uttara's culture is ancient and cultural heritage that traces the rise and empire. Its Independence Day of Malkur University and Odisha and are witnessing the many cultural endeavors on this occasion. ମାନେ ଯାହା ଦେଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଆରେ ତାହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ କଲେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କଲେ। Write the summary of the passage in English with a given title. Books have been an integral part of human civilization for centuries, serving a vessel of knowledge, culture, and imagination. They offer readers a unique opportunity to explore different worlds and perspectives and ideas and enriching our lives in our countless ways. Lastly, books are a treasure trove of knowledge. They cover a array of subjects from history and science to art and philosophy. Through books, we can learn about different cultures, historical events, and the lives of the influential figures. This knowledge fosters understanding and empathy, helping us appreciate the diversity of human experiences. For students and lifelong learners alike, books are essential tools for education, providing depth and context that surpasses the mere internet browsing. Moreover, books ignite and imagination. Fictional stories allow us to escape into fantastical realms where we can experience advantage and beyond our wildest dreams. Authors like J.K. Rowling and J.R.R. Tolkien
intricate walls that captive readers, encouraging creativity and inspiring future generations of writers and artists. Readers' fiction also helps develop empathy by stepping into the shoes uh, of diverse characters. We gain insights into their emotions. Additionally, books serve as a source of comfort and solace in times of distress. Many turn to literature for guidance and championship. Uh, companionship. The simple act of curling up with good book can provide a much needed respite from stresses of daily life, offering a moment of peace and reflection. In conclusion, books are invaluable assets to individuals and society as whole. They educate, inspire, and comfort, shaping our thoughts and beliefs in a rapidly changing world. The significance of books remains steadfast and reminding us the power of words and importance of the continuous learning, embracing reading and embracing a richer and more informed life. ମାନେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବୁକ୍ ଆଉ ବୁକ୍ ର ଗୁରୁତ୍ୱ ସେ କହୁଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଟା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ବୁକ୍ସ ର ହେଡିଂ ଦେଲେ ବୁକ୍ସ ଟାଇଟଲ ଦେଲେ ବୁକ୍ସ ଆର୍ ହାଭିଂ ଭାଇଟାଲ ପାର୍ଟ ଅଫ ହ୍ୟୁମାନ ସିଭିଲାଇଜେସନ ର ଆମେ ଦେଖିଲେ କି ବୁକ୍ସ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ ନଲେଜ ମିଳୁଛି କଲଚର ମିଳୁଛି ଇମାଜିନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଦେ କଭର ଭେରିୟସ୍ ସବଜେକ୍ଟସ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଇମ୍ପାଥି ହଉଛି ଦେନ୍ ବୁକ୍ସ ଆର୍ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଏଜୁକେସନ ପାଇଁ ପ୍ରୋଭାଇଡିଂ ବିୟଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବୋରିଂ and fictional stories like kono J.K. Rowling then J.R.R. Tolkien and captive readers and inspire future ପାଇଁ ମଧ୍ୟ inspire କରୁଛି generation ପାଇଁ reading fiction helps କଣ କରୁଛି empathy allowing readers understand diverse characters ଗୁଡାକ emotion struggles ଗୁଡା ଜାଣିବାକୁ ମିଳୁଛି books provide comfort and solace during the times of distress and offering the respite of daily stress ପାଇଁ ମଧ୍ୟ help କରୁଛି relief କରିବା ପାଇଁ in conclusion books are invaluable stress the individual and society ଏଟା ଗୋଟେ asset ର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଟେ I think clear ହେଇଥିବ ଠିକ ଅଛି तो आम कौन कले टेस्ट फॉर कंप्लीट कले तो 399 रे 399 रे 3 मंथ में 3 मंथ एंड 599 रे 6 मंथ में आपण माने सब्सक्रिप्शन नहीं पारिबे ठीक अछि तो पेड कोर्स रे हमरो केत अछि पेड कोर्स रो प्राइस होछि 399 रे 3 मंथ में एंड 599 रे 6 मंथ में एगुडा ए जो पेड कोर्स रे हम सब्सक्रिप्शन कोर्स रे कोन हबो पूरा हमको हाई कोर्ट्स आपण मानको हाई कोर्ट देन आसीबो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स देन आसीबो सीजीएल सब पई कोन एटे गोटे कोर्स रे सब गुडा आपन को जहाँ भी कोर्सेस बा जहाँ भी सब्जेक्ट गुडा सब जगह आप अवेल कर पारे ठीक अच्छे जो मैंने इंटरेस्ट अच्छा आपण मैंने आमर आप को जाई किनी पारे अदरवाइज आप कमेंट सेक्शन में आपण मैंने कहींपारे किपर आम यार आपको आम आंसर देव ठीक अच्छे जब आप जापर ना आमर आप को जापर अदरवाइज आम सहित कंटाक्ट करेंगे आमर कंटाक्ट नंबर से अच्छी अदरवाइज आप कमेंट सेक्शन में लिखिले आपको किपर सब्सक्रिप्शन नेबार अच्छे आम आपको जनईदेव ठीक अच्छे तो चलते आज ये रखा नेक्स्ट पुणी आम टेस्ट 5 सहित पुणी देखा जय जगन्नाथ।